Mo telong o luka dolu. Mo telong o luka dolu. Singa me ya yin ya ge kamporuna amongel. Mo telong o luka dolu. Mo telong o luka dolu. ये बस्ती इंटर हो गया आलोंग टाउन से भी कितना किलोमीटर दूर है अभी भी गाड़ी भी इतना फुलफिल नहीं आ रहा है ये हम लोग का बस्ती ये 28 हाउस है और ये वोटर लिस्ट तो ये 200 ऐसा कुछ हो रहा है और उसका बाद हम लोग तो ये अपना खुद से माने ये जंगल कटिंग सटिंग ऐसा कुछ होके खाना पीना को खा रहा है और टाउन से भी खरीदने के लिए भी गुरा करी नहीं है ऐसे मैंने हेड लूज से ना सीख रहा है इसलिए मैंने अपना ये पानी खेती और जूम खेती करके हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं और ये टाउन का सब्जी भी नहीं रहता है आलू सालू ऐसा कुछ नहीं रहता हम लोग ये ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि नाम है कि मैंने जैसे ओगन रोल ऐसा कुछ ये पत्तू ऐसा कुछ ये अपना से तुन के खाना पीना का साथ में हम लोग खा के बैठ रहा है पहले शिकार भी बहुत किया था ये आजकल ये शिकार भी कमती हो गया शिकार को भी आजकल थोड़ा से ये अपना बस्ती में बोन हो रख रहा है समय समय माने ये शिकार होता है कॉमन से नहीं होता है आजकल चिड़िया को भी मारेगा चूहा को भी मारेगा और ये हरिण को भी मारेगा बोई का हमारा जो सबसे लास्ट है बोई का हमारा बड़ा है सबसे लास्ट छोटा वाला हाँ सबसे छोटा तो इतना छोटा है इतना उसका ये लाल होता है ना हाँ सब लाल है सब बड़ा लाल है Hunting and logging pose serious threats to Siang Valley's rich biodiversity. Through our interaction with the local communities and our wild bioresource surveys, it's clear that many animals are becoming increasingly rare. Most of the time, local hunters get only smaller mammals and small birds. Large mammal and birds such as hornbills are extremely rare to come across nowadays. Only 7% of Siang Valley's vast forests are protected. And even within those protected areas, for example, Mauling National Park, which is the largest within the valley, and Daring Wildlife Sanctuary, which is its only grassland PA, are among the least explored protected areas. The remaining 90% of the forest which lies outside the protected area network are facing increasing threats these days. So our prime objective for the first year was to baseline map the land use land cover of Siang Valley, and of course the most dominant feature of Siang Valley is the agricultural land, the rice cultivation, which is mostly concentrated around the Siang River. And along with that, some of the recent land use changes can be the orange cultivation, the citrus cultivation, which has crept up in last 10-12 years. Mostly in the lower elevations, from elevations ranging from 200 meter to 1300 meter, which are probably ideal elevations for forest cultivations. And that's why Siang is losing most of its forest cover.
देखो ना, हम लोग का बच्चा लोग दिन में हम लोग इसको ऐसा चीज को ये तो इतना ज़्यादा नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? इसको ना बू 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 बोलता है। सफेद ऐसा निकल गया ना, इसको ऐसा करके हम लोग ये अच्छा है। Biodiversity refers to all living organisms on the planet. Whereas when we use the term wild bioresources, it means only those aspects of biodiversity which are directly used by people either for food, medicines or for cultural rituals. Siang Valley is extremely rich both in terms of biodiversity and the wild bioresources. The rich diversity of wild bioresources is a testament to the deep traditional ecological knowledge that the local communities of Siang Valley has. With the rise of urban population, many has lost touch with the wild bioresource. But the demand, particularly for the wild edibles and medicinal bioresource, is still very high. Therefore, in Siang Valley, market trade of wild bioresource play a vital role for income and livelihood for the local community. Throughout survey across the market of Siang, we have encountered 100 species of plant, 30 species of animal, including birds, mammals, fish, amphibian, and insect. Some wild fruits such as tapir and edible insects such as ramimode caterpillar fetch very high price for their vendors. For example, a tapir costs rupees 500 per kilo and ramimode caterpillar costs rupees 1000 per kilo. The market survey shows us that it is not only important to protect the biodiversity but its bioresource because it provides a very high value income and livelihood to the local community. To identify forests with high biodiversity potential outside protected areas, we are mapping the intact forest habitat of Siang Valley by analyzing conservation factors such as presence of rare, endemic and threatened mammals and birds. Based on this, we found Yosing forest to have very high conservation value. And now we are working with the local communities of Yosing to explore the conservation plans. In 2023, the ATREE Siang project was launched to protect its vast forests and the rich biodiversity and bioresources that it contains. We are working alongside the local communities to protect the forest outside the protected area network. At the same time, we are working closely with the forest department, equipping them with tools for better monitoring of the forests and also to improve the protection and conservation status of the protected areas. ये ट्रिगर हो जाएगा, ये इसका फ्लैश है, अगर आप ये दबाया तब वो पूछेगा क्लियर है. Since last year, we also have been conducting joint camera trapping surveys inside Mauling National Park with the forest department. ठीक है, तो अच्छा जो कैमरा ट्रैपर होगा ना, उसका एक भी गंदा फोटो नहीं है. जला है ना? अभी ऑफ करके भी देखो. अभी तक हम लोग मोलिंग के अंदर 3 बार कैमरा ट्रैप इंस्टॉल कर चुके हैं ना. तो सबसे पहले इंकू विलेज में किया है. तो इंकू विलेज जो पायुम रेंज के अंदर में आता है. हम लोग कैमरा ट्रैपिंग का मेथड ऐसे है कि हम लोग 2x2 ग्रिड में लगाते हैं और जहाँ में कैमरा ट्रैप लगाया है उसका जीपीएस पॉइंट लेता है और वो पॉइंट को मार्किंग वो करने के लिए हम लोग
वो कोई उसका ये स्टोन होगा या फिर कोई पेड़ होगा ना, उसमें हम लोग पेन कर देगा या फिर कोई रिबन बांध देगा। तो इंक्यू विलेज में हम लोग 30 डेज के लिए कैमरा ट्रैप को इंस्टॉल करके रखा था। उसके बाद में रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मार्बल कैट, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट और एशियाटिक ब्लैक बियर और बार्किंग बियर, ये सब का बहुत अच्छा रिजल्ट है। Siang has lost already 40% of its forest cover, and if we don't save the last remaining forest of Siang Valley, we'll lose all of its wildlife and biodiversity. हम लोग का ये सियांग बेल्ट में जितना जंगल है, पहाड़ है, वो बायोरिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत रिच है। तो उसको हम बहुत समय से देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो हम भी यहाँ का लोकल होने के नाते हम भी ये सोचते हैं कि यहाँ का जो सियांग बेल्ट का जितना जंगल है, जानवर है, सब बचो। तो अगर हम लोग अभी बचाना शुरू नहीं करेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। जंगलों में काली होने से हम लोग भी काली हो जाएगा। जो उन लोग भी जीना है और हम लोग भी जीना है, जीने से सब अमान होने से आदमी बहुत होगा।